हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है एंजन आईपी टैक्स और ये सीएफए सेक्शन का एक सब टॉपिक है। तो देखते हैं इस पर किस तरह की वीडियो बन सकती हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो करते हैं सॉल्व। व्हाट डज एंजन स्टैंड फॉर? तो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। विच नेटवर्क वाज प्राइमरली डेवलप फॉर द वॉइस कनेक्टिविटी टू वायरलाइन सब्सक्राइबर? तो PSTN। What is one of the main challenges faced by the operator in maintaining multiple networks? So increase capex. What is the primary advantage of engine over PSTN? So packet switching technology. C. What is the responsibility of the access layer in engine architecture? तो इसमें डायरेक्ट सब्सक्राइबर अटैचमेंट। What protocol is commonly used for the interaction between engine network elements? तो इसमें था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। What is the term used to describe the ability of NGN to provide users with access to networks and service their choice? तो unfettered access. D will be right answer. What is the main responsibility of the control layer in engine architecture? तो call setup, routing and charging policies. C. What is the one of the key factor determining the successful migration of PSTN to NGN? तो building a reliable IP backbone network. C. Which phase of migration involved replacing local exchange with soft switch and access gateway? तो ये हुआ था phase 2. What technology goes engine primarily used on its transport layer? तो MPLS. What is the main advantage of engine over PST in terms of service integration? तो easy of introducing services. 13 देखते हैं. What is the primary responsibility of the application layer in engine architecture? तो provision of enhanced services. What is the primary objective of engine architecture? Simplify service provisioning. What protocol is commonly used for the signaling transport in engine? To SIGTRAN. What is the primary function of media gateway controller MGC? Establish call connection. Which network is primarily based on IP in engine architecture? तो transport layer. What is one of the key benefit of engine architecture for operator? To reduce OPEX. What is one of the challenges faced during the migration from PSTN to NGN? Interworking between different networks. What technology does engine primarily use for its access layer? तो इसमें CPU होता है. What a primary function of access gateway AG and NGN? तो इसमें terminate media streams. What phase of migration involves the replacement of transit network element with soft switch architecture? तो ये phase 1 में हुआ था. What protocol is commonly used for the interaction between media gateway controller MGC and media gateway in NGN? तो H.248. What is the primary responsibility of signaling gateway in engine architecture?
तो कन्वर्ट सिग्नलिंग मैसेज। What phase of migration involved in the replacement of local exchange with soft switch? Phase 2. What is the main responsibility of the controller engine? Call setup, routing and charging policies. What protocol is commonly used for signaling transport engine? Citron. What is the primary function of media gateway controller engine? Establish call connections. Which network is primarily based on the internet protocol in NGN? तो ये तो लास्ट टाइम ही बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ एनजीएन आर्किटेक्चर फॉर ऑपरेटर? तो रिड्यूस ओपेक्स। रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंज फेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन PSTN? तो इंटरवर्किंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। व्हाट टेक्नोलॉजी डज एनजीएन प्राइमरी यूज फॉर एक्सेस लेयर? तो इसका तो बताया था मैंने, सिप। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सेस गेटवे इन एनजीएन? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका। व्हाट फेज ऑफ माइग्रेशन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिट नेटवर्क एलिमेंट विद सॉफ्ट स्विच आर्किटेक्चर? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा फेज 1। What protocol is commonly used for interconnection between media gateway controller and media gateway in NGN? तो ये भी क्वेश्चन बताया हुआ था मेरा, सी आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिग्नलिंग गेटवे इन NGN? तो ये सारे शायद रिपीटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कन्वर्ट सिग्नलिंग मैसेज, convert signaling messages. What phase of migration involved in the replacement local exchange with soft switch? 37. Phase 2. What is the main responsibility of the control layer in NGN? C. Commonly used signaling, Citron. ये रिपीट क्वेश्चन में वैसे ही लगा दे रहा हूँ सारे पे आंसर इसमें। 41 ट्रांसपोर्ट, रिड्यूस ओपेक्स। व्हाट इज वन चैलेंज फेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन? तो इंटरवर्किंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, एक्सेस। तो इसमें सिप। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सेस गेटवे इन एनजीएन? What phase of migration involve replacement transit network element with soft switch? Phase 1। इसका हो जाएगा H.248। What is primary responsibility? Architecture 48। Convert signaling, Phase 2। और इसका हो जाएगा सी, कॉल सेटअप। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं या और भी इस तरह क्वेश्चन आपको रिक्वायर हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।